Good morning, students. Welcome you all to our maths online classes. We are in chapter number 4, fractions, addition and subtraction. Now today we are going to see word problems related to fractions. Okay, so please come to exercise 4.6, question number 1. And the question is, Ramesh ordered 11 upon 12 kg of wood. That means total number of wood with Ramesh is 11 upon 12 kg and used 5 upon 12 kg for making a piece of furniture. तो उसने फर्नीचर बनाने के लिए इसमें से कितना यूज कर लिया है? 5 upon 12 kg. Fine. How much wood is Ramesh left with? अब रमेश के पास कितना वुड बचा है ये आपको कैलकुलेट करना है. Okay, so denominator will remain same 12. For the numerator, what you have to do? Multiply the whole number and denominator. That is 12 into 11. It is 132. 132 plus this 11 numerator. So it will become 143. So total रमेश के पास कितना wood है? 143 upon 12 kg. Okay? Wood used for making furniture. अब उसने इसमें से कुछ wood निकाल लिया और उसका उसने फर्नीचर बना लिया. तो वो कितना वुड उसने लिया है फर्नीचर बनाने के लिए? इट इज 5 upon 12 kg. दैट इज डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, दैट इज 12. 12 8 is 96. 96 plus 5 is 101. So he has used 101 upon 12 kg of wood for making the furniture. फाइंड वुड लेफ्ट विथ रमेश. अब उसके पास कितना बचा? तो टोटल वुड में से जितना यूज हो गया वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन यू विल गेट द वुड लेफ्ट विथ रमेश. सो यू हैव टू डू 143 अपॉन 12 माइनस 101 अपॉन 12. बोथ दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. So you will calculate the numerator like this and write the denominator as it is like this. Okay. So 143 minus 101 is actually 42. So it is 42 upon 12. Now both are divisible by 6. 6 7s is 42 and 6 2s is 12. So it will become equal to 7 upon 2. In 7 upon 2 the numerator is greater, so you have to convert it into mixed fraction. How will you convert? In the denominator it will remain 2. 2 3s is 6 plus 1. So wood left with Ramesh is 3 1 by 2 kgs. Okay. Come to question number 2 and the question is, Honey baked a cake. She used 5 upon 8 cups of flour. ठीक है. हनी ने एक केक बनाया है, उसमें उसने कितना कप ऑफ फ्लोर यूज किया हुआ है? 4 5 upon 8 cups. Fine. And 3 1 upon 8 cups of sugar. So cups of sugar used is 3 1 upon 8. How much more flour than sugar did honey use? ठीक है. तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्लोर कितना ज्यादा यूज हुआ है शुगर से. ठीक है. शुगर से कितना ज्यादा फ्लोर यूज हुआ है. So first you have to convert this mixed fraction to improper fraction first. So in the denominator it will remain 8. For the numerator you have to calculate. 8 4 is 32. 32 plus 5 is 37. So the cup of flour used is 37 upon 8. Cups of sugar used is 3 1 upon 8. इसको भी आप convert करिए. In the denominator it will remain 8 as it is. For the numerator 8 3 is 24. 24 plus 1 is 25. So देखिए टोटल कप फ्लोर कितना यूज हुआ है? 37 अपॉन 8 कप्स यूज हुए हैं. एंड शुगर के कितने कप यूज हुए हैं? 25 अपॉन 8. एंड द क्वेश्चन इज हाउ मच फ्लोर इज मोर देन शुगर. शुगर से कितना ज्यादा फ्लोर यूज हुआ है? सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द कप ऑफ शुगर फ्रॉम कप ऑफ फ्लोर, isn't it? So see, 37 upon 8 minus 25 upon 8 you have to do. Both these are like fractions, so you can directly calculate the numerator like this and write down the denominator as it is. Fine. So 37 minus 25 is 12. So I am writing here 12 upon 8.
and both numerator and denominator both are divisible by 4, so we have to divide it. So 4 3s is 12, 4 2s is 2, so it will become 3 by 2. Fine. And in 3 by 2, numerator is greater than the denominator, so we have to convert this improper fraction to mixed fraction also. So देखिए 2 1s is 2 plus 1 is 3. So the answer is flour is more than sugar by 1/2 cups. Okay. Come to question number 3. Pulkit lives 93/10 kilometer away from the school. So the distance of Pulkit's home from school is 93/10 kilometer. Fine. And his classmate Raghav lives 6/10 kilometer away. So the distance of Rahul's home from school is 6/10 kilometer. So how much farther does Pulkit live than Raghav from school? देखिए आपको डिस्टेंस दिया हुआ है पुलकित के घर से स्कूल तक का, राहुल के घर से स्कूल तक का. फिर आपसे पूछ रहा है कि कितना ज्यादा दूर रहता है पुलकित राहुल से. ठीक है. सो यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस इन डिस्टेंस. कितना दूर है, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, दैट इज 10, एंड फॉर द न्यूमरेटर you have to calculate 10 6 is 60, 60 plus 1 is 61, so the answer is 61 kilometer. Fine. पुलकित कितने दूर रहता है 93/10 स्कूल से, और राहुल कितने दूर रहता है स्कूल से 61/10. तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 93/10 minus 61/10, लाइक दिस ओनली. कि कौन ज्यादा दूर है इसके लिए आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा. एंड बोथ दिस टू फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन, so you will directly subtract the numerator and write down the denominator as it is. So 93 minus 61/10, 93 minus 61 is 32, so 32/10. Now both numerator and denominator both are divisible by 2, so divide करिए. 2 16s are 32 and 2 5s is 10, so now we are having 16/5. Here the numerator is greater than the denominator, so you have to convert it into mixed fraction also. Denominator will remain same like 5, and what must be multiplied to 5? 3. So 5 3s have become 15. Now how much you have to add? 1. So the difference of distance become 3 1/5 kilometer. So you have to write down like this. Pulkit lives 3 1/5 kilometer farther from Raghav. Okay. Come to question number 4. Bunty walked 15/8 kilometers. ठीक है. Distance of walking is 15/8 kilometer. So convert it into improper fraction. Denominator will remain same 8. 8 1s is 8. 8 plus 5 is 13. So walking distance कितना है 13/8 kilometer. Fine. Then he took a bus and travelled another 3 1/6 kilometer. फिर उसने बस ली और उसने बस में कितना ट्रैवल किया 3 1/6 किलोमीटर. बस में उसने कितना ट्रैवल किया 3 1/6 किलोमीटर. सो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए. इन द डिनोमिनेटर इट विल रिमेन 6. फॉर द न्यूमरेटर 6 3s is 18. 18 plus 1 is 19. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस कितना है 19/6 किलोमीटर. फाइन. After that he took a taxi and travelled 11/4 kilometers. फिर उसने टैक्सी में कितना ट्रैवल किया 11/4 किलोमीटर. फाइन. How much distance did he travel in all? So you have to calculate the total distance travelled by walking, by bus, by taxi. So for the total distance travels you have to add all these distances. Okay. So you have to write 13/8 plus 19/6 प्लस 11/4. ठीक है. टोटल डिस्टेंस के लिए आपने वॉकिंग डिस्टेंस, बस के डिस्टेंस को और टैक्सी के डिस्टेंस को सबको ऐड करना पड़ेगा. फाइन. नाउ दिस 3 आर अनलाइक फ्रैक्शंस. तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 6 and 8.
2 से करेंगे, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8. Again with 2, 2 1 is 2, 3 will remain same, 2 2 is 4. Again with 2, 3 will remain same, 2 1 is 2. Now with 3, 3 1 is 3. So the LCM here is 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24. So the LCM here is 24. Okay. Now you have to make all the denominators equal to 24. So start. So what must be multiplied to 8 so that the denominator will become 24? You have to multiply 3 in the denominator. So you have to multiply the same number in the numerator also. So 13 3 is 39. Okay. Come to 19 upon 6. What must be multiplied to 6 so that the denominator will become 24? 6 4 is 24. So you have to multiply 4 in the numerator also. So 19 4 is 76. Now come to 11 upon 4. What must be multiplied to 4 so that the denominator will become 24? 4 6 is 24. So you have to multiply 6 in the numerator also. So 11 upon 6, 11 into 6 is 66. Now you have to add all these three distances. So 39 upon 24 plus 76 upon 24 plus 66 upon 24 you have to do to find the total distance travelled. Numerator को add करिए like this 39 plus 76 plus 66 and write down the denominator as it is 24. So 39 plus 76 plus 66 is 181 upon 24. Okay. Now you have to convert this improper fraction to the mixed fraction. How will you do? 24 in the denominator. 24 7s is 168. And how much you have to add more? 30. So the total distance travelled by him is 713 upon 24 kilometers. Okay. Thank you so much.